Big news that's coming in right now. This is Aam Aadmi Party's big claim. They say that Kejriwal will be arrested today. AAP says Kejriwal is likely to be raided today by the Enforcement Directorate. Kejriwal's arrest is imminent, they say. Is it? In the Liquorgate dangle case, remember yesterday the Enforcement Directorate had summoned Kejriwal to appear before the agency for questioning, but Kejriwal skipped the summons a third time. And he sent a reply to the Enforcement Directorate saying that this entire case seems to be politically motivated. He's yet to be told whether he's being called by the agency in his capacity as the Chief Minister of Delhi or AAP convener, as an individual or as the Chief Minister, as a political person who in fact leads the party, that is the Aam Aadmi Party. Listen in to what Delhi Minister Atishi has to say. आतिशी, आपने जो ट्वीट किया है, हालांकि इस तरह की संभावनाएं पहले भी आप लोगों की तरफ से जाहिर की जा रही थी। देखिए, हमें काफी विश्वास सूत्रों से खबर आ रही है कि कल अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड होगी और उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। ये बिल्कुल साफ है कि जो ये पूरा टाइमिंग है, जो उनको बार बार समन भेजा जा रहा है, अब उनको अरेस्ट करने का प्लान बनाया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक ऐसा केस, इसमें 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें आज तक 1 रुपया कैश, ना कोई सोना, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई शेल कंपनी के कागज बरामद हुए, उसमें ऐसी क्या हड़बड़ी आ गई कि 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर 3 बार समन भेज दी। लेकिन आतिशी, बार बार सवाल ये पूछा जा रहा है कि ईडी की तरफ से समन भेजने का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, या फिर क्यों सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। फिर ईडी भी तो बुलाए, बताए कि उन्हें बुला क्यों रही है, विटनेस के तौर पे बुला रही है, अक्यूज के तौर पे बुला रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रही है, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के तौर पे बुला रही है। और इस टाइमिंग से तो बहुत सवाल उठता ही है कि 1.5 साल से इन्वेस्टिगेट हो रहे केस पे लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ऐसा क्या हो गया। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा सवाल पूछना है ईडी को, तो वो लिखित में क्वेश्चनर भेजते, प्रश्नावली भेजते, अरविंद केजरीवाल जी उसके जवाब दे देंगे। ऐसा क्या सवाल है जो वो लिख के नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन बुलाकर ही उनको पूछना है? तो आप कह रही हैं कि आपके विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कल रेड मारी जाएगी और उनकी गिरफ्तारी होगी, तो आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने को तैयार है। हम ईडी सीबीआई की धमकियों से डरते नहीं हैं। हम ईडी सीबीआई का जो इस तरह से मिसयूज हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को, अपने विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। My colleagues Himanshu Mishra and Amit Bharadwaj are now joining me live this morning. Amit, coming across to you first. Good morning. Why is the Aam Aadmi Party expressing apprehension that Arvind Kejriwal is likely to be arrested today? Good morning, Paulami. You know, Aam Aadmi Party leaders have been claiming since last night that Arvind Kejriwal could be raided today, his residence could be raided today, and after that raid, he could be arrested by the Enforcement Directorate in the Delhi excise policy case. Now, AAP is basing its claims saying that, you know, we have very reliable sources within the Enforcement Directorate who had indicated us about the impending raids and the arrest which could happen today itself. And later in the night, around the midnight rather, Paulami, you had very senior leaders of Aam Aadmi Party, including the National General Secretary Organization Sandeep Pathak, making this claim that ED is most likely to arrest Arvind Kejriwal on Thursday. And then you had a series of tweets coming out, Delhi ministers such as Saurabh Bharadwaj, Atishi making that claim that look, because of the Lok Sabha elections, what will happen is that Aam Aadmi Party chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will be arrested by the Enforcement Directorate, and they have yet again accused it to be part of the vendetta politics that is being played out by the central government against the Aam Aadmi Party, because that's been the central defense of the Aam Aadmi Party in this entire case. But very interestingly, Paulami, yesterday the statement that was, rather the letter that was written by Arvind Kejriwal to the Enforcement Directorate after skipping the third summon,
he had mentioned, he had questioned the intention of the Enforcement Directorate, saying that as to whether the intention of the Enforcement Directorate is to investigate the matter or to tarnish his image, saying that, these notices or summons get leaked in the media even before it is served to him. Along with that, there was a twist in the entire story, towards the end of the letter. Arvind Kejriwal has urged for a written questionnaire from the ED, and he had said that he will be responding to the questions best possible to his knowledge with documents and whatever supportive evidences he might have. So this twist as well, he's trying to show that he's not avoiding the investigation. He wants to cooperate, but he wants a written questionnaire. And along with this, Polimi had also indicated that through January he is busy as Aam Aadmi Party national convener in the Delhi Rajya Sabha elections and as Delhi Chief Minister in the preparations for Republic Day. So clearly giving out a timeline that he is busy in January as well as seeking written questionnaire. But now Aam Aadmi Party leaders and sources are claiming that Mr. Kejriwal's house could be raided today itself by the Enforcement Directorate. Polimi. Amit, just stay on with us. Himanshu Mishra is also joining us at the moment. Himanshu, क्या कार्रवाई रहेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अब जब 3 बार अरविंद केजरीवाल उनके समन्स पर भी नहीं आए उनके सामने? देखिए, कई जो मेन रास्ते हैं, कोर्ट भी जा सकती है, ईडी कोर्ट जाकर के कह सकती है कि भाई सहयोग नहीं मिल रहा है और वहां से ऑर्डर ले सकती है ईडी पूछताछ के लिए। इसके अलावा ईडी आ भी सकती है, जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है। देखिए, केस चल रहा है, इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, चार्जशीट भी ईडी ने किया हुआ। और मीनवाइल देखिए, चूंकि जिस तरीके से पॉलमी रात में ट्वीट किया गया, ट्वीट के बाद जो दिल्ली पुलिस है वो सतर्क हो गई और ये सीएम हाउस के पहले तकरीबन 100 मीटर पहले ही जो गेट है जो पूरी रोड की उसको बंद कर दिया गया है। जो सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट को आकर के देख रही हैं कि दरअसल जिस तरीके से ट्वीट हुआ तो पुलिस को इस बात की आशंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सुबह के वक्त यहां पर पहुंच जाए, जिसके मद्देनजर पुलिस ने इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लगातार पुलिस सतर्क है और आसपास के इलाकों में भी पुलिस नजर रख रही है। जी, पॉलमी। जी, Himanshu and Amit continue to be live with us. Amit, of course, has been speaking to his sources within the Aam Aadmi Party. Yesterday, of course, Amit, the sense that Enforcement Directorate was giving to our colleagues on the ground as well was that the evidence, as they say, against Arvind Kejriwal is much more loaded as in comparison to Sanjay Singh's. If Sanjay Singh with lesser evidence went to jail as in custody at the moment, the apprehensions that the Aam Aadmi Party might have about Arvind Kejriwal could very well likely be true. True, Polimi, as the sources were indicating that the evidences against Arvind Kejriwal is much higher when compared to Sanjay Singh, and that is also because of the two facts. Arvind Kejriwal is Chief Minister of the National Capital, which means the entire cabinet and the cabinet decisions do fall under, or he was aware of the decisions that were being made by his cabinet ministers, including Mr. Manish Sisodia in this case, while the excise policy case was being drafted. And if you go by the case details as well, the Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation has been claiming that the ill-gotten money or the alleged kickbacks went to Aam Aadmi Party, meaning that, and there have been claims made by the investigative agencies that this money was used in Goa Assembly elections campaign. So that way as well, if you connect the dots in that particular context as well, Aam Aadmi Party's national convener is Arvind Kejriwal. So that if we put it together, we can say that yes, what investigative agencies are indicating at could be these two pathways, the Delhi Chief Minister as well as national convener of Aam Aadmi Party. So hence the evidences could be higher against Arvind Kejriwal as being claimed by the investigative agencies. But as far as Aam Aadmi Party is concerned, they have been maintaining that the investigation is going on since August 2022. Manish Sisodia has been under arrest for an year now.
but not a single penny has been recovered either by the CBI or ED during these raids, arrest and the investigation which is carrying on for the past year and a half. So that has been central defense of the Aam Aadmi Party, saying that this is purely political vendetta, a vendetta to crush, destroy Aam Aadmi Party. And they often say during the off-record briefings that because of the kind of expansion that Aam Aadmi Party has witnessed in the past 2 years, especially during the Gujarat elections, that what actually possibly triggered the BJP, and that is why this action is being taken against them. But these are political defenses. Now the legal battle is going on for Aam Aadmi Party, and we'll have to see as to whether, as being claimed by AAP leaders, Arvind Kejriwal's house gets raided today. Okay, yes, of course, we are standing by for that. In fact, if it were to happen, my colleagues Amit and Himanshu are on the ground outside the Chief Minister's residence today, keeping a watch on things. Thank you so much both for joining us with those details. Let's listen in one more time to Delhi Minister Atishi. आतिशी, आपने जो ट्वीट किया है, हालांकि इस तरह की संभावनाएं पहले भी आप लोगों की तरफ से जाहिर की जा रही थी। देखिए, हमें काफी विश्वास सूत्रों से खबर आ रही है कि कल अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड होगी और उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। ये बिल्कुल साफ है कि जो ये पूरा टाइमिंग है, जो उनको बार बार समन भेजा जा रहा है, अब उनको अरेस्ट करने का प्लान बनाया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक ऐसा केस, इसमें 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें आज तक 1 रुपया कैश, ना कोई सोना, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई शेल कंपनी के कागज बरामद हुए। उसमें ऐसी क्या हड़बड़ी आ गई कि 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर 3 बार समन भेज दी। लेकिन आतिशी, बार बार सवाल ये पूछा जा रहा है कि ईडी की तरफ से समन भेजने का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, या फिर क्यों सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। फिर ईडी भी तो बताए कि उन्हें बुला क्यों रही है, विटनेस के तौर पे बुला रही है, अक्यूज के तौर पे बुला रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रही है, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के तौर पे बुला रही है। और इस टाइमिंग से तो बहुत सवाल उठता ही है कि 1.5 साल से इन्वेस्टिगेट हो रहे केस पे लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ऐसा क्या हो गया। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा सवाल पूछना है ईडी को, तो वो लिखित में क्वेश्चनर भेजते, प्रश्नावली भेजते, अरविंद केजरीवाल जी उसके जवाब दे देंगे। ऐसा क्या सवाल है जो वो लिख के नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन बुलाकर ही उनको पूछना है? तो आप कह रही हैं कि आपके विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कल रेड मारी जाएगी और उनकी गिरफ्तारी होगी, तो आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने को तैयार है। हम ईडी सीबीआई की धमकियों से डरते नहीं हैं। हम ईडी सीबीआई का जो इस तरह से मिसयूज हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को, अपने विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। Okay, so that is of course the apprehension that the Aam Aadmi Party is expressing. Now,